I'm going to teach Oya rows. It is also called as motif. It can be used in any type of project, or especially it is used in the scarf. For making this Oya rows, we need 1 mm crochet hook and silk thread. ओया रोज को बनाने के लिए हमें सिल्क थ्रेड और 1 mm के हुक की ज़रूरत है. For making this rose, we need to make the slip knot first. After making slip knot, make chain 10, or you can make 10 chains. स्लिप नॉट बनाएं और 10 चेन बनाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. After making 10 chains, we have to join it to form a ring. 10 चेन बनाने के बाद इसे जॉइन करें स्लिप स्टिच के ज़रिए. आई एम मेकिंग द रिंग with the help of slip stitch in last chain. Yes, we made the ring now. After making ring, make 24 double crochet in this ring. First make chain 3, 1 2 3, chain 3 बनाएं. After that make 24 double crochet in the ring. 24 double crochet ring में बनाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23. This is the last one, 24th. After making 24 double crochet, we have to connect this ring by making slip stitch on the top of the chain 3. इसे chain 3 स्पेस के ऊपर स्लिप स्टिच के ज़रिए कनेक्ट कर दें. इस तरह से. और ये जो थ्रेड है आप इसे कट कर सकते हैं. You can cut this thread. We just made this ring. You can see in this picture. First we have to make the ring, then the petal. We have to make 4 petals. This is the first petal, second petal, third petal and fourth petal. Now we will make the first petal. For making first petal, you need to make chain 10. फर्स्ट पेटल बनाने के लिए 10 चेन बनाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. After making 10 chains, you have to connect it with the help of single crochet. Just start counting it. This is the chain 3. You have to count 9 double crochet. You have to make the single crochet in the 9 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is the 9th one. 9 डबल क्रोशे में आपको ये कनेक्ट करना है सिंगल क्रोशे के ज़रिए. You just made chain 10 loop. You have to work in this loop. First make chain 3. 3 chain बनाएं. Then turn करें and make 20 double crochet in this chain 10 space. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20. After making 20 double crochet in chain 10 space, make chain 3. 1 2 3 3 chain बनाएं last double crochet के बाद, and after this make the slip stitch in the same chain 10 space. एक slip stitch बनाएं यही space में. You have just completed first petal. For making second petal, you need to make chain 10. सेकेंड पेटल बनाने के लिए हमने चेन 10 बनाया है, और इसको हमें इसमें अटैच करना है स्लिप स्टिच के ज़रिए. हम यहाँ से 9 डबल क्रोशे काउंट करके अटैच करेंगे. वी नीड टू कनेक्ट दिस चेन in the 9 double crochet. We'll start counting it from here. We'll connect this with the help of single crochet. एक सिंगल क्रोशे बनाएं और इसे कनेक्ट कर दें. इसके बाद चेन 3, मेक चेन 3, ट्वेंटी डबल क्रोशे इन चेन 10 स्पेस. 20 डबल क्रोशे बनाएं चेन 10 में स्पेस में. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. After making 20 double crochet, we have to connect it on this chain 3 on the top of the chain 3. इसे चेन 3 के ऊपर कनेक्ट कर दे स्लिप स्टिच के ज़रिए. We'll use slip stitch for connecting them.
you just made second petal, first, second. For making third petal, you have to make chain 10 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. थर्ड पेटल के लिए 10 चेन्स बनाएं और इसे हमें कनेक्ट करना है सिंगल क्रोशे के ज़रिए 12th डबल क्रोशे में इसके अपोजिट पेटल पे. हियर we are going to connect this on the 12th double crochet with the help of single crochet. This is the 12th double crochet. We can connect it with the help of slip stitch also. I am using slip stitch. Make chain 3. 3 chains बनाएं. After making 3 chains, we have to turn like this and we'll work on this chain 10 space. We'll make 20 double crochet in the same space here. 20 डबल क्रोशे ये चेन 10 स्पेस में बनाएं. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. After making 20 double crochet, we'll make chain 3. चेन 3 बनाएं 20 डबल क्रोशे के बाद. And slip stitch in the same stage, in the same space. We have just completed third petal. Now we have to make fourth petal over here. Exactly opposite. For making fourth petal, make chain 10. Chain 10 बनाएं fourth petal बनाने के लिए. 3,
4 5 6 7 8 9 10. After making chain 10, we have to connect it with the help of single crochet in the 12th double crochet exactly opposite. Chain 10 को connect करें 12th double crochet में, count it from here, leave this chain 3 and just count it from here and connect it with the help of single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. We are connecting this chain 10 in 12th double crochet of the previous petal with the help of single crochet, or you can just connect it with the help of slip stitch, whatever you like. After connecting, we have to make again 20 double crochet in the space. Before making 20 double crochet, just make chain 3 बनाएं, टर्न करें, टर्न इट और 20 डबल क्रोशे बनाएं सेम स्पेस में. Seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. After making 20 double crochet, you have to make slip stitch on the top of this chain 3. chain 3 के ऊपर एक slip stitch बना के connect कर दे. You have just completed your 4th petal. I prefer smaller rows, so that's why I'm just making 4 petals of this rose. If you want the bigger one, you can just repeat the same process again and again and you can just make the bigger one. I'm just ending here. हम छोटा रोज बना रहे हैं इसलिए सिर्फ इतने ही पेटल बना रहे हैं, 4 पेटल वाला. We just made Oya rose, and in my next video I'm going to explain how to connect Oya rose or your motif and how to use it
in the scarf will connect in this scarf. In my second video I am going to explain how to connect it. And if you want to just enhance its beauty, what you can do, you can use another color like green or something else, and just start making single crochet border on the top of this petal like this. Just make the border with different colors, so it will beautify it and it will look really good. In this Oya rose I have attached leaf. There are 2 leaves I have attached in it. How to make this leaf? It is very simple. You have to repeat this step. Just connect your green thread in the center with the help of slip stitch and make chain 10 and go to the 9 double crochet and just connect it with the slip stitch. Make chain 3 and 20 double crochet in the chain 10 space and reach here in the center. After reaching here, you have to make chain 3 and just connect your chain 3 in this chain 10 space. After this, make chain 10 and connect it on the opposite side on 9 double crochet. Make chain 3, then 20 double crochet and connect it on the top of the last chain 3 space you made here. अगर आपको लीफ बनाना है ग्रीन, तो सेंटर में ग्रीन थ्रेड को अटैच कीजिए और अटैच स्लिप स्टिच के ज़रिए कीजिए और चेन 10 बना के 9 डबल क्रोशे पे कनेक्ट कीजिए. फिर कनेक्ट होने के बाद में चेन 3 बनाएं और 20 डबल क्रोशे बनाएं. लास्ट में जब 20 डबल क्रोशे एंड होता है, चेन 3 बनाएं और यही स्पेस में ही चेन 3 को स्लिप स्टिच के ज़रिए यहाँ पर अटैच कर दें. जैसे ही चेन 3 ख़त्म होता है वैसे ही चेन 10 बनाएं और यहाँ पर अपोजिट साइड में इसके 9 डबल क्रोशे पे जाकर एक स्लिप स्टिच लगाएं और ये चेन 10 को स्पेस को अटैच कर दीजिए. फिर ये जब चेन 10 स्पेस बन जाएंगी तब चेन 3 बनाएं, 20 डबल क्रोशे बनाएं और यहाँ पर जो लास्ट में जो चेन 3 था उसके टॉप पे जाके स्लिप स्टिच के ज़रिए कनेक्ट कर दें. लास्ट वाला जो था हमने सिर्फ इतना ही स्मॉल रोज़ बनाया था विदाउट लीफ के, तो वो स्मॉल था. ये थोड़ा सा बिग है. आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं या और अगर आपको मतलब स्कार्फ में अटैच करना है तो कुछ लीफ के साथ में अटैच कीजिए, कोई विदाउट लीफ के साथ में.